Hi everyone. Analytical chemistry, as the word stands, that it is the chemistry which based on analysis. So we analyze different things and came to know the conclusions that from which things they are made up of, or how many quantity of different things are used to made up that thing. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आपकी डेली लाइफ की बात करें तो आपकी कॉफ़ी में कैफ़ीन की अमाउंट डिटरमिन होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री से। आपके लिपस्टिक में मौजूद हेवी मेटल्स की अमाउंट डिटरमिन होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री से। आपका जो आप हमेशा कोई भी कोई वीडियो देखते हैं जिसमें बता रहे होते हैं दैट दिस मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज़ प्रेज़ेंट इन योर मिल्क और दिस मच अमाउंट ऑफ विटामिन ए, सी, डी एंड अदर थिंग्स और मिनरल्स प्रेज़ेंट इन योर डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलती हैं? सो ये पता चलती हैं आपको उसे एनालाइज़ करने से, केमिकली एनालाइज़ करने से। So that is how that analytical chemistry is important in your life, and for second year students life analytical chemistry इसलिए ज़रूरी है because that is the last chapter of your book, and with respect to your paper what you need to know that student will be able to compare the classical method of analysis with modern method. So this is one of the question that might come in your paper because that is the learning outcome you need to familiar with, क्योंकि उसकी रीज़न ये है आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सीख रहे हैं और उसके बारे में क्या चीज़ पूछी जा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरिजन एंड लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं द पर्टिकुलर substance you want to identify, detect, separate, determine, that is considered as analyte। और जिस चीज़ के अंदर आप उसको डिटरमिन कर रहे होते हैं वो जो मीडियम है दैट इज़ कंसिडर्ड एज मैट्रिक्स। सो कोई भी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको कोई भी सैंपल दिया जा रहा है और फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ vitamin A in that particular material, or if you want to determine that is any particular fat or lipid or anything present in it or not, or if you have any perfume and you want to determine any of the particular chemical that is it present in it or not, so वो particular chemical जिसे आप determine करना चाह रहे हैं that is considered as analyte and the whole medium is considered as matrix। सो हम करते ही एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये है कि हम मटेरियल्स को एनालाइज करते हैं ताकि हम इसे क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज देख सकें। सो हमारे पास जो एनालिसिस की टाइप है वो क्वालिटेटिव भी है एंड क्वांटिटेटिव भी है। इट्स मोर लाइक व्हेन यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग और आप कपड़े खरीद रहे हैं। सो आप कितने कपड़े खरीदेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लॉथ्स और आउटफिट्स यू नीड, 1 2 3, दैट इज़ क्वांटिटी। और आप किस तरह का ख़रीद रहे हैं, आप गर्मियों के लिए ख़रीद रहे हैं, आप सर्दियों के लिए ख़रीद रहे हैं, आप सिल्क ख़रीद रहे हैं, whatever you are buying, that stuff, that is a quality. So in the same way we do it, we do the same thing when we are studying our materials. So types of analysis जो आपके conventional methods हैं या modern methods हैं उनमें दोनों तरह से होती है, quality wise भी और quantity wise भी। So here we are to compare classical and modern analytical methods. So classical method का सबसे पहला पॉइंट ये तो ये वो फंडामेंटल टेक्निक्स हैं लेबॉर्ट्री के अंदर जो बहुत अरसे से प्रैक्टिस हो रही हैं। फॉर एग्जांपल कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू आप डिटरमिन करते हैं, और मॉडर्न एनालिसिस आपका इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड एनालिसिस है। एंड इंस्ट्रूमेंटल एंड मॉडर्न, दीज आर द अल्टरनेट टर्म्स वी यूज्ड इट। ट्रेडिशनल मेथड्स में यूजुअली हम केमिकल एनालिसिस लेते हैं एंड केमिकल मेथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, बट इट डजंट मीन कि वहाँ पर इक्विपमेंट यूज़ नहीं हो रहा। ऑब्वियसली इक्विपमेंट समहाउ यूज़ हो रहा है, बट दैट इज़ नॉट दैट हाई टेक इंस्ट्रूमेंट्स। एंड मॉडर्न इक्विपमेंट जो हैं वो आपके पास जो मॉडर्न एनालिसिस के लिए यूज़ हो रहे हैं, दे आर इंटीग्रेटेड विद कंप्यूटर एंड दे आर गिविंग यू ऑल द रीडिंग्स एंड ऑल द ग्राफ्स एंड एवरीथिंग। And then classical method, they are more cheaper, they are easily available in labs, in lab of your school and colleges. But modern analytical methods, they are very expensive and the machines are highly specialized and for particular chemical analysis, and they are not easy to available everywhere. Then classical analytical method is also considered as wet chemistry because we use chain or multiple of chemical reactions to identify any certain analyte. And in modern analysis, the analysis is carried out by your machine. You are just putting your analyte inside it and whatever chemical you want to analyze that analyte, that's it. And then the classical method consumes more time
then the instrumental analysis, and your modern analytical techniques, they are time effective techniques. And classical method is more cheaper and it is easily available, and obviously modern is costly and they are not as easily available. We discussed it earlier. This one is earlier. And in classical analytical methods we have more error chances, and in modern analysis we have more accurate and more precise results. And for classical there is not any particular specialization required or any not particular skill required to do that. Obviously the basic any of the person who is a chemist can do that, but if you are modern, want to carry out that modern analytical methods to determine the analyte, then you need a specialized person which can operate that machine, if it's an HPLC or any of the other spectroscopic machine or anything. Then you need a proper person to conduct that. uh, for classical or conventional methods we have salt analysis technique, we have gravimetric analysis, we have volumetric analysis. In volumetric analysis we have further titration, we have different types of titrations, we have acid based titrations, we have redox titration, precipitation titrations. And for gravimetric analysis, we have both direct gravimetric analysis and indirect gravimetric analysis. So these are the examples of your conventional methods. And for your modern methods, we have electroanalytical methods and we have optical methods. In optical methods, we further have spectrometry, spectrophotometry, and in your electroanalytical methods, voltammetry is there. And so this is just the simple picture to show classical and modern analytical methods. So simply in this whole video we learned that what is the difference between classical and modern with their certain examples. Thank you.